बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं सिमरन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। Hi guys, welcome to Z Media India.com. My name is Simran Keswani and today with us we have someone who must have been a prominent part of your childhood. Some of you might know her as Doremon, some of you might know her as Pikachu and some of you might know her as Chota Bheem. Because today we are with someone who's the voice behind all these characters, Sonal Kaushal. So Sonal, thank you so much for being with us today. Thank you Simran for such a lovely introduction. So Sonal, I want to start of course by asking you about your journey. So I think जब आपने अपनी journey शुरू करी थी आप 8 साल की थे, right? Yes. And usually kids of that age are watching the cartoons, but you were the voice behind it. So I want to know how it all started, and when was it that you decided that this is it, this is what I want to be? So I started, you rightly said, I started when I was 8 years old, and it started with All India Radio with some audio plays and things like that. And I was 13 when I started dubbing for Doremon. And yes, it was an age where I had to kind of go to school, have fun, this, that. But मैं खुद भी dubbing करते वक्त बहुत enjoy करती थी. And I actually never decided that I want to do this. It just happened and it kept on happening in fact. और बस होता गया, I went with the flow and here I am today. Okay. So like Doraemon की आप जैसे बात कर रहे हो आप सिर्फ 13 साल की थे. So how long did it go? Like कितने साल तक आपने dubbing करी for Doraemon? I started in 2005 and I was the voice of Doremon till 2018. So 14 years. Yes. Yeah, okay. So can you tell us that how did that happen with you, Doraemon? So it was in 2005 when I went on for an audition for this character. Of course, I did not know what's the character, and I went there and I was told that it's an audition for dubbing. And मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि dubbing होती क्या है, because उससे पहले तक I had always been on an audio platform only. And video platform के लिए भी I was doing a few shows for दूरदर्शन. बट मैंने या तो ऑडियो किया था या फिर वीडियो किया था. नाउ दिस वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, जिसमें मुझे वीडियो देख के एंड देन डब करना था. सो फॉर अ किड, आई वाज अ किड एंड इट वाज अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एट द सेम टाइम. एज आई ऑलवेज से, डबिंग इज अ टास्क, इट इज अ टास्क, क्योंकि आपके सामने वीडियो होता है, आपके हाथ में स्क्रिप्ट होती है, हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स में आवाज आ रही होती है, आपकी खुद की भी आवाज आ रही होती है, देन यू हैव टू स्पीक ऑल्सो, you have to emote also, you have to change your voice also, lot of things at the same time. So but somehow I understood the instructions that were being given by the directors over there, and मुझे ये एक बात समझ में आ गई थी that they were looking for a different voice, and बच्चों के लिए सबसे मुश्किल होता है voice change करना. But I could do it at that time, thankfully, and I was selected for the voice of Doremon. Wow, that's amazing. Yes. Thank you. जैसे आपने बताया कि you started very young and you did it for so many years, especially for Doraemon. So when you grow older, of course, आपकी voice में भी change आता है. So I want to know this कि जब आप छोटे होते हो and now if you do the same voice, does it get difficult now? Actually now it's easier because when I started doing Doremon, I could not modulate my voice. So मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हुआ ये था कि Doremon की जो असली आवाज़ है, it's very robotic. And when I was auditioning for Doremon, they told me you have to modulate your voice. तब तो modulate का मतलब भी नहीं पता था क्या होता है. So they said कि आपको थोड़ा सा robotic sound करना है. So original Japanese Doremon sounds like गोमेन नोबिता-kun, this kind of. And मैंने ऑडिशन में कर दिया, थोड़ा बहुत 3-4 डायलॉग्स थे, मैंने कर दिए. बट व्हेन आई सैट डाउन टू रिकॉर्ड अ होल एपिसोड, आई कुड नॉट सस्टेन दैट वॉइस. सो द डायरेक्टर्स ओवर देयर, द टीम डिसाइडेड कि सोनल आप अभी, और मैं छोटी थी तो उन्हें मुझ पे, आई एम श्योर मुझ पे दया आई होगी उस टाइम, एंड दे सेड कि आप अपनी नॉर्मल आवाज़ में डब कर दो. सो मैंने पूरा एपिसोड नॉर्मल आवाज़ में डब किया, उसे भेजा गया मुंबई. आई वॉज डूइंग दिस इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली. I was doing this in Delhi, so उसे भेजा गया मुंबई, and मुंबई से ये फीडबैक आया कि हमें ये आवाज़ जो है बच्चे की आवाज़, ये हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है, so go ahead with this one. That was your original baby voice.
Yes, that was my original voice at that time in 2005. So when I grew up and even today when I do it, अब मुझे वैसी आवाज करने के लिए अपनी आवाज को चेंज करना पड़ता है. But at that time it was very easy for me because वो मेरी normal आवाज थी. I was just speaking in my normal voice. थोड़े Okay, बहुत okay. emotions add करके. Right. So, you know, when I was doing my research about this industry, I got to know it's a very wide industry and there are very Yes. various realms in this industry. There's something as voice actor, there's Yeah. voiceover artist, and there's Yeah. also dubbing artist. Right. So they all are different from each other, right? Yes. So I Yes. want to know the difference between all of them and which one, according to you, is the most difficult. So yes, you rightly said. A lot of people they meet me and they say, "अरे डोरेमोन की मिमिक्री करके दिखाओ ना." तो मैं अब मुझे ऐसा लगता है मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूं. दैट इज नॉट मिमिक्री, दैट इज माई ओन वॉइस. आई एम काइंड ऑफ द क्रिएटर ऑफ दैट वॉइस. सो आई एम नॉट मिमिकिंग एनी कैरेक्टर, दैट इज माई वॉइस. सो डिफरेंस ये है कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है. वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होता है जैसे हम डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, इसमें जो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं उसके पीछे जो नरेशन चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ वॉइस ओवर. नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट्स अ वॉइस ओवर. सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट अलग होते हैं जो वॉइस ओवर्स करते हैं. देन वी हैव डबिंग आर्टिस्ट जो डब करते हैं, किसी और कैरेक्टर को अपनी आवाज़ देते हैं. जैसे जितने भी इंग्लिश शोज हम नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन सब पे हम इंग्लिश, टर्किश, जापानीज, चाइनीज, कोरियन जितने शोज देखते हैं हम हिंदी में, वो एक्चुअली डबिंग आर्टिस्ट ने डब किए होते हैं. और वॉइस ओवर और डबिंग में डिफरेंस ये है कि डबिंग में आपको एक्टिंग का बहुत यूज होता है एंड वॉइस ओवर में एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टास्क, इट्स अ डिफरेंट जॉब जिसमें आपको बहुत ही प्लेन जीरो इमोशंस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. सो नो इमोशंस. डबिंग में लॉट ऑफ इमोशंस. सो वॉइस एक्टिंग डबिंग में चाहिए होती है और वॉइस ओवर्स में नहीं चाहिए होती. एंड उसके बाद मिमिक्री आर्टिस्ट भी होते हैं जो दूसरों की आवाज और उनका स्टाइल और उनका पूरा पर्सोना कॉपी करते हैं. दोज आर मिमिक्री आर्टिस्ट्स. Okay. So which one is the most difficult according to you? I think dubbing is most difficult, and उसमें भी dubbing for animation is the most difficult because जब हम डब कर रहे होते हैं किसी कैरेक्टर को तो वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की वो तो करनी ही है. आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है, आपको इमोट करना है, आपको सब कुछ करना है, आपको सिंक करना है, वो सब है. बट व्हेन यू आर डबिंग फॉर एन एनिमेटेड कैरेक्टर तो आपको अपनी आवाज़ भी चेंज करनी है. You have to laugh like that character, you have to, in a way you have to breathe like that character, because animation में everything is over the top. अगर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर बात कर रहा है तो वो ऐसे बात नहीं करेगा जैसे हम दोनों करें. वो ऐसे बात करेगा, वो सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी में बात करेगा. अगर वो हंसेगा भी तो नॉर्मली हम जैसे हंसते हैं ऐसे नहीं हंसेगा. So everything is so energized and so over the top. So I feel dubbing for animation is the most difficult. Yeah, and you have chosen the most difficult one then. I think the talent, the industry, this profession, it has chosen me rather than me choosing, because I was very young when I started doing this. So I actually never decided to, क्योंकि उस टाइम पे पता भी नहीं होता था कि ऐसा this will become a profession one day. And आज जो सिचुएशन है, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उस टाइम पे नहीं थे. 2005 में कहाँ था, सिर्फ एक दूरदर्शन होता था और कुछ चैनल्स होते थे जिसमें भी डबिंग तो नहीं था, टीवी शोज आते थे. सो उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसे सोचा ही नहीं था, बट इट हैपेंड. Yeah, right. My next question is actually this only, that, you know, there are so many people who might not know about this industry, but how wide and huge this industry is. So I want to know this from you, that how should one go about it who are interested in this field? And also, where do you see it going? So today we have a lot of information online. Thanks to social media, a lot of people now know about this industry. Thanks to the Kapil Sharma show, I must say. Because मैं Kapil Sharma show पे आई थी and वहाँ से एक्चुअली मेरा जो टर्निंग पॉइंट है मेरे करियर का, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग द इंडस्ट्री इटसेल्फ. सो बहुत सारे लोगों को पता चला, अच्छा ये भी एक काम है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग करते हैं. बहुत सारे लोग हैं, मैं भी एक्चुअली सिखाती हूँ ऑनलाइन. तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम हमने स्कूल में इतनी मिमिक्री की है, हम स्टेज पे अपने इवेंट में, कॉलेज इवेंट में करते थे. नाउ देयर टैलेंट इज बीइंग
put at the right place because they know about it because of social media, because of the Kapil Sharma show. तो आजकल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मुंबई में बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ सिखाया जाता है कि ये आर्ट फॉर्म कैसे करते हैं. एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, हाउ टू अपनी लैंग्वेज पे कैसे काम करना है, हाउ टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है. ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इज हैपनिंग स्पेशली फॉर डबिंग इज हैपनिंग इन मुंबई. तो कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैं लखनऊ से हूँ या मैं झांसी से हूँ या मैं यहाँ से वहाँ से हूँ, तो मैं कैसे करूँ, मैं मुंबई नहीं आ सकता. तो आई ऑलवेज टेल देम दैट यू कैन डू वन थिंग, कि जिस भी शहर में आप हो उस शहर में ऑल इंडिया रेडियो तो ज़रूर होगा, उस शहर में रेडियो स्टेशन ज़रूर होंगे. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, यू कैन गेन सम एक्सपीरियंस ओवर देयर, माइक नॉलेज ले सकते हो. जो भी आपको चाहे इंटर्नशिप करने का मौका मिले वहाँ से इंटर्नशिप कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, एंड देन व्हेन यू फील यू आर रेडी टू मूव टू मुंबई फॉर वर्क, देन टेक दैट स्टेप. And of course this industry is huge, and thanks to all the OTT platforms that have come up, उसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना. जस्ट इमेजिन, अगर मैं सिर्फ एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँ, हर प्लेटफॉर्म पे हर रोज एक नया शो तो रिलीज हो ही रहा है या एक नई मूवी तो रिलीज हो ही रही है, और वो मूवी बहुत सारी लैंग्वेजेस में डब की जाती है. और क्योंकि काम इतना बढ़ गया है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज बहुत सारी वॉइसेस रिपीट हो रही हैं एंड द क्लाइंट डजंट वांट दैट, दे आर लुकिंग फॉर न्यू काइंड ऑफ वॉइसेस. सो काम तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, एंड दैट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस. Definitely. Also, can you tell us a bit about the scope in terms of monetization? Monetization in the voicing industry? Yeah. The scope, as in, I would say it totally depends upon the amount of work that you do. When you work as a freelancer, so it totally depends on आप कितना काम कर रहे हो सकता है आप पूरे दिन बिजी हो सकता है आप हफ्ते में 4 दिन बिजी हो, 4 दिन काम कर रहे हो सकता है आप 4 दिन काम कर ही नहीं रहे. So it totally depends on that. But I feel you can easily earn when you start. तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज ये जो आर्ट फॉर्म होता है, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, चाहे वो ये वाला आर्ट फॉर्म हो, उसे सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इट टेक्स प्रैक्टिस. जब हम डांस सीखना शुरू करते हैं तो आज जिस लेवल पे हम डांस करते हैं, हो सकता है 4 साल बाद हम अलग ही लेवल पे डांस कर रहे हो. सो इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट धीरे धीरे आप thousands से लेके lakhs तक पहुंच सकते हो. Wow, amazing. Yes. Okay. Now talking about the evolution in technology, especially since the time AI has been introduced, how has that impacted the job of a voiceover artist for both good and bad? It hasn't impacted anything in any sense till now, but I'm sure impact will be there. AI का impact तो हर industry पे आने वाला है, I'm sure. And I think we should be ready for it. There's no point sitting and cribbing and getting negative about it कि यार क्या होगा, कैसे होगा, काम चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा. देखो जब कोविड आया था, लॉकडाउन हो गया था, we had no idea what this is. We had no idea what this virus is, what will happen, how will it happen. लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में काम कैसे होगा. But we are human beings. We adapt. So अब ये AI आने वाला है, एंड AI पे काम चल रहा है सालों से, जो हमें पता भी नहीं था. But I think we should be ready for it. Whatever happens, let's see how it goes. We should be ready to work with it. So, Right. Yeah. That was very insightful. अब एंड में मैं आपके साथ एक फन राउंड करना चाहूंगी. So I'll be giving you some movie dialogues, popular movie dialogues, and you have to say it in the characters that you've done. Okay. Perfect. So the first one is बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है señorita, and you have to say it in Doremon's voice. Okay. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. Okay. हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं as छोटा भीम. हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं सिमरन. Okay. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह as शिनचैन. Okay, so I'm not the voice of Shin-chan, but I can mimic that voice for you. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह.
Wow, I can't believe you have not done this voice. Okay. Dawn को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है as Pikachu. Okay, so Pikachu is he always says just Pikachu, Pika, हाँ. P, but मैं उसकी आवाज में ये वाला डायलॉग बोल देती हूँ कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है पीका। Wow, lovely. And last, मैं अपनी favorite हूँ as Powerpuff Girl. okay, मैं अपनी फेवरेट हूँ। Oh wow, that was amazing. Kudos to you for that. thank you so much, Simran. Amazing. It was very insightful. Thank you so much for being with us today.